So a very good evening to the all aspirants watching out this video. So today we have in this toppers talk of NABARD, one of the successful candidates of 2021, and Mr. Amit is with us, and he has secured all India rank 15 in this examination. And it is his dedication only which has led him to this success. So a congratulations from my side, Amit, for your success in this examination. Your hard work ultimately paid off. आपने जो मेहनत करी अमित वो दिख रहा है और आज आप नाबार्ड पे हो. Thank you, sir. Thanks a lot. You had been supporting me right from the notification came through the process. So I owe a lot to you, and you had supported a lot to me, and hopefully I could do justice to the support and justice to myself. So I am happy today that I am in the NABARD, and thanks a lot. Good, Amit. So thanks for the gesture, Amit. But मेहनत तो आपकी है. Just मेरे कुछ guidance थे. जो भी बन पड़ा मेरे से मैंने आपको guide किया. But मेहनत आपने starting से बहुत करी है, right? And दिखता था. मैं जब भी quote करता हूँ किसी को, some new candidate जब भी मुझसे पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या नाबार्ड लक पे डिपेंड करता है, तो मैं आपके कुछ कैंडिडेट्स के एग्जांपल देता हूँ. यू आर वन अमंग देम. तो आपके बारे में, अमित के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस लड़के को मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ जब से नोटिफिकेशन नहीं आया था, एंड इसका इंटेंट क्लियर था कि मुझे नाबार्ड में जाना है. एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग अ लॉट, जिसको हम कहते हैं ना धो डाला या रगड़ डाला, उस टाइप से इसने प्रैक्टिस की है. चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ARD हो, चाहे ESI हो, हर एक सब्जेक्ट को इसने बहुत 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 प्रैक्टिस किया और इसके मेहनत है. ड्यू टू दैट ही इज देयर. ही हैज आल्सो क्वालिफाइड अदर एग्जामिनेशंस लाइक SBI में भी इनकी ट्रेनिंग चल रही थी. तो इनका डेडिकेशन ही है जो डिफरेंट एग्जाम्स क्लिक करते चले गए इनके लिए. तो अमित, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपका ये पहला अटेम्प्ट था नाबार्ड के लिए? नहीं सर, last time also I attempted NABARD. I applied for the specialist stream in the dairy and food technology, but जैसे कि इस साल वैकेंसी नहीं थी तो I had to change my plan. तो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही I got to know that I have to apply for the journalist stream. So उसके बाद में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था for the ARD and ESI. So I have to be very flexible, and I have to change my plans for the specialist stream, for the journalist stream. So see, this is a quite good message that Amit has given. ऐसे बहुत से कैंडिडेट है, they call me and they say that I should go for generalist or I should go for specialist. So always I say that it depends upon the number of vacancies. So how do you adapt it to the process? Because once you're preparing for the specialist, बाद में आपने फिर change कर लिया and you started prepare for the generalist. So how do you adapt it for the overall system? क्या ESI और ये सब आपको difficult नहीं लगे, या फिर आपने कैसे manage किया सारी चीजों को? Just so basically sir, I started my preparation from the April month, and notification released on the 15th of July something. So I was preparing for the dairy and food, and side by side I was also preparing GA, the GA PIB schemes and all. मुझे ये था कि कहीं ना कहीं अगर नहीं आता तो फिर I have to move on to the journalist for the journalist post. तो जब पता लगा कि भाई नहीं आया अभी, मतलब वैकेंसी नहीं आई है, तो then I analyzed the journalist stream paper for the past 3 to 4 years, and I came to conclusion that the ESI static is not of very much important. right. So I skipped the ESI static for this time being, and I focused on the 4 to 5 chapters of the ARD static. तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को ही कंप्लीट किया, and I did revision of those chapters 2 to 3 times. Then I completed my other topics of the ARD static, and then I went to the ESI static. तो यही मेरा स्ट्रेटजी था, एंड कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को सबसे पहले कवर करो और उसी का सबसे पहले रिवीजन करो. अगर आपको टाइम मिलता है then you should move to the less important topics and less important जो भी आप ESI स्टैटिक है उसकी तरफ.
So this approach I followed, and success, and fortunately it paid off. ओके सो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें अमित, सो प्रीलिम्स में अभी क्वालिफाइंग सेक्शन एंड मेरिट सेक्शन हो गया तो व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू द एस्पिरेंट्स? ईएसआई के लिए क्या सोर्स फॉलो करें, एआरडी के लिए क्या सोर्स फॉलो करें, एंड क्वालिफाइंग को बहुत से कैंडिडेट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं और बाद में आउट ऑफ लिस्ट ही हो जाते हैं, तो कैसे बैलेंस बना के रखे और ईएसआई एआरडी के लिए आपने क्या क्या रेफर किया और कैसे तैयारी करी? So I would tell how I prepared. तो एक्चुअली क्या था कि पहले से ही आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द क्यूआरई सेक्शन, राइट. सो जैसे ही नोटिफिकेशन आया आई डिडंट प्रिपेयर मच फॉर द क्यूआरई सेक्शन, बिकॉज जो एआरडी एंड ईएसआई सेक्शन है उसमें काफी ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो उनको काफी मतलब रटना पड़ता है, काफी मगअप करना पड़ता है. तो जो क्यूआरई सेक्शन है उसका आई थिंक आई वुड सजेस्ट एस्पिरेंट्स टू कि उसका पहले से प्रिपरेशन करके साथ में चलिए. ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट एक मंथ में प्रिपेयर करिए करना है या फिर उसके मतलब उस टाइम ज्यादा उस वो जो लास्ट 1 मंथ है दैट द मोस्ट ऑफ द टाइम शुड बी गिवन टू द मेरिट सेक्शन, बट वी शुड नॉट नेग्लेक्ट क्वालिफाइंग सेक्शंस like especially like decision making, computer, because decision making में मैंने देखा कि काफी लोगों के बिलो 1 मार्क्स आए हैं, एंड काफी लोगों ने मार्क्स सिक्योर किए हैं काफी अच्छे मेरिट्स में, बट दे फेल टू सिक्योर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग सेक्शन. तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप करें तो योर फोकस should be more on the merit section, but you should not neglect qualifying section, because at the end of the day you have to qualify those sections to qualify for the mains. राइट. और अगर सोर्सेज की बात करें, एएसआई अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करी, एंड एआरडी मतलब एग्रीकल्चर के लिए हिस्टेरिया क्रिएटेड है कि एग्रीकल्चर मतलब स्टैटिक जो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, जो मतलब एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, डर जाते हैं काफी. सो व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू देम? फॉर द ईएसआई स्टैटिक आई थिंक आपने नोट्स शेयर किए थे फॉर द इन द कोरा, तो आई फॉलोड दोज, एंड आई आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यूपीएससी साइट्स, बिकॉज वहां पे काफी सारा मटेरियल मिलेगा ईएसआई स्टैटिक के लिए. तो ईएसआई स्टैटिक में जैसे चैप्टर टॉपिक वाइज है, तो आप टॉपिक वाइज टाइप कीजिए ना, आगे यूपीएससी लिखिए, तो आपका काफी सारा मटेरियल होगा. और जैसा कि पता है कि नाबार्ड में आपका इतना ईएसआई स्टैटिक नहीं आता, तो इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट मेंस में काम आएगा, बिकॉज इन मेंस इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट दे मे कनेक्ट द स्टैटिक पार्ट एंड द करंट अफेयर पार्ट. तो वहां पे आपको एक फेयर आइडिया, एक बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि ईएसआई को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. एंड फॉर द ईएसआई एंड एआरडी करंट अफेयर आई फॉलोड अफेयर क्लाउड. मैं रोजाना डेली अफेयर क्लाउड की पीडीएफ पढ़ता था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू मेक द नोट्स ऑफ द पीआईबी साइट. वहां पे जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं एंड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसके मैं नोट्स बनाता था, एंड आई यूज्ड टू रिवाइज इट डेली और देन वीकली, एंड फिर बाद में मंथ खत्म होने के बाद में मंथली, क्योंकि बिकॉज रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रिविजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप ऑप्शंस में एग्जाम में नहीं कंफ्यूजन कम होगा वहां पे. एंड फॉर द एआरडी व्हाट आई डिड, आई एनालाइज द पेपर ऑफ द लास्ट 3 to 4 years. वहां पे मुझे 5-6 चैप्टर्स ऐसे मिले कि वहां पे उनको पहले पढ़ना था. तो फॉर दैट आई फॉलोड योर द मास्टर नोट्स, बिकॉज वो काफी क्रिस्प एंड काफी अच्छे क्वालिटी के थे. सो आई फॉलोड दोज, एंड उसके बाद मुझे टाइम मिला, देन आई स्टडीड फ्रॉम द सुंडा बुक, नेमराज सुंडा. So these 2-3 sources I followed for the ARD. I think it was sufficient to crack both the mains and pre-exam of NABARD. Okay, एक question Amit, what I wanted to ask and what I recommend to the other candidates as well. आपने भी mention किया कि when candidates are referring PIB ना, they are running behind कि compilation मुझे मिल जाए, I will read the compilation of PIB. So what is the difference? अगर हम ओरिजिनल से पढ़े तो आई थिंक इट्स बेटर rather than running for the compilation of PIB, because हम जब ओरिजिनल PIB पढ़ते हैं तो हमारा जो वे ऑफ थॉट है वो ज्यादा इनहांस होता है, आई थिंक, राइट? सो आप भी मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया आप ओरिजिनल PIB ही रेफर करते थे नोट्स बनाने के लिए अपने? हाँ सर, मैं ओरिजिनल PIB को ही रेफर करता था, बिकॉज
through original PIB we get a lot of information. Compilation में क्या होता है कि जो compile करके दिया हुआ रहता है and वही आपके मतलब वही आपको एक्सेस होता है. बट इन दी अगर आप ओरिजिनल साइट से पढ़ते हो देन आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, उसमें से आपको क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्या इंफॉर्मेशन फिल्टर करनी है, और आपको काफी सारे का नॉलेज मिलता है. तो आई थिंक ओरिजिनल इज मच बेटर फ्रॉम इफ यू डू फ्रॉम द ओरिजिनल, खुद के नोट्स बनाते हो तो वो काफी ज्यादा बेटर है. एंड अगर आप वर्किंग हो देन you have no other choice to refer the compilation part. But अगर आप full time preparation हो then I would suggest that you should make your own notes because it will help you at the end of the day. And उसमें अगर आप notes बनाते हो then I would suggest to make the online notes because it would also help you in mains descriptive. You will be much more familiar by typing. As you will be making notes, so you have to type. And तो आपको वहाँ पे काफी help मिलेगी. माउस का कैसे यूज कर रहे हो आप, बिकॉज अगर आप वहां जाके माउस कर रहे हो, माउस का यहाँ पे घर पे आप कीपैड यूज कर रहे हो वहां पे, और वहां पे जाके आप अगर माउस यूज करोगे तो देन समटाइम्स इट क्रिएट दिस स्मॉल स्मॉल थिंग क्रिएट डिफरेंस इन द एग्जाम. So I would suggest you to go for the original content, but if you don't have time, then there is no other option to refer than the PIB compilation. That's right. Now coming on to the mains part of NABARD examination, marks भी out हो चुके हैं, and as I said you आपका all over India you have secured rank 15 in the examination. What is your marks in the descriptive part of ESI, Amit, in mains? Exactly, I didn't remember, but it was around 33 points. Yeah, in the range of 30s, right? 33.75, I think it is. 33.75. 32, 33. Yeah, out of 50, and in objective also you secured, I think, good marks. It's about 33.5. 33 point. So you are balanced between both the things, objective and the subjective. Yeah, and English they have given less marks this time. Strict checking was there. English this year they have done the strict checking, so the average marks has also gone down, and I could not score. जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया, but it was around 58. So, no, 58 is good. We can't say अच्छा है, कहीं ना कहीं हो सकता है lose out हो गया था. तो descriptive practice जो है, how you used to practice, कैसे आप practice करते थे descriptive answers mains में लिखने को, how you were practicing and how many questions you practiced, what was your overall methodology for practicing the descriptive? Or next point, how do you write your answer? Did you wrote in paragraph or did you wrote in points? So for the mains descriptive, I didn't follow much. You used to conduct a session daily on the YouTube session on the YouTube. तो आप जैसे दिन में 3 क्वेश्चन देते थे, so what I used to do, I used to make a fodder material in the morning, and in the evening I used to write those questions. Then I used to analyze on the YouTube session in the late evening. So answers लिखने का, I think in the mains descriptive we should write in the points form. जो सबसे पहले heading है, then the first para we can write as usual we are writing, and in the main body we should try as much as possible कि उसको points form में लिखो, and then the conclusion we can write. And apart from this, I also took the mains power play. So in those in that test series, you had given some of the questions on the current issues. अगस्त के थे, सितंबर के थे, जुलाई के थे. तो जो questions थे, I made the fodder material on those questions, and I उसको जाने से पहले 1-2 बारी पढ़ लिया था. And इसके अलावा I think मैंने कुछ नहीं किया था. For the 1 month, you shared all 3 questions daily, तो वही किए थे, around 50 to 60 questions. Yes. Practiced before going to the mains examination, and I think it was good enough. Right. So the very important crux, what you can take out from what Amit has said is that, see, you try to practice the limited thing, but you create your own material just as he prepared the fodder material for himself. ऐसे आप बना लो कि you can revise during the examination. जब आप एग्जाम देने जाने वाले हो तो 1-2 दिन पहले आप रिवाइज कर सको, so that you can club the points together. आप एक अच्छा आंसर लिख सको, you can present a very well answer. So that is important. Try to practice minimum, but उसको रिवाइज कीजिए अपने हिसाब से, अपने नोट्स बना लीजिए, फोल्डर बना लीजिए,
उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ड्यूरिंग दी ओवरऑल एग्जामिनेशन प्रोसेस. राइट अमित? Yes, sir. And one more point I would like to add कि some in the mains descriptive अपने को कुछ data भी add करना होता है. So for data part, I think we should extract the 2-3 points of the each sector. Like health sector से 3-4 data points अपन ने ले लिए, education sector से ले लिए, renewable sector से ले लिए, agriculture से ले लिए. तो वो उसका एक compilation बना सकते हैं, and then we can use those points in our answers in the examination. So those data will help a lot in the answer writing. So that I would suggest to the new aspirants. Good. Very good point indeed mentioned by him. You can inculcate all the aspirants who are preparing. Very good point. I like this point. This is very good point he have mentioned about. And one more point, newcomers are very much anxious about the word limit 600 and 400. Does it require to type 600, 400 words, or it is more important to justify the context of the question? What was your observation? I think it is more important to justify the answers, because मैं भी नहीं लिख पाया था. I think on the aggregate I wrote around 1500 words. Just 1500 words out of 2000. So the main focus should be that we should justify the answers. अब जो जैसे 600 के क्वेश्चंस होते हैं, 600 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, देन अगर आप 400 या 450 में लिख पा रहे हो, या तो आपका इट इज फाइन as long as you are providing the information which is needed in the question. तो वो I think sufficient है. And in one of the question cross breeding, उसमें I think I didn't have the much content, but थोड़ा बहुत मैंने लिखा था, but that was I think crisp लिखा था, and I wrote around 300 to 320 words. So I think the focus should be given more on providing the right content, right information, rather than focusing more on the word limit. Right. One more thing I would like to share to the aspirants about Amit is that he never gets settled. ऐसा होता है बहुत से एस्पिरेंट्स के साथ कि फेज 1 पास कर लिया हमने, तो फेज 2 के लिए थोड़ा अच्छा हमने तो कर लिया, वी गेट सेटल्ड. फेज 2 कर लिया तो इंटरव्यू के लिए वी गेट सेटल्ड. बट ही वाज नॉट सेटल्ड अंटिल ही गॉट सेलेक्टेड. फेज 1 के बाद भी इन्होंने उतना ही मेहनत किया, फेज 2 के बाद भी उतना ही मेहनत किया, यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर दैट इंटरव्यू आल्सो. इसने कुछ नहीं छोड़ा. Each and everything he has prepared from A to Z, I can see, for the interview also, and he got very good marks in the interview also, as well. So what was your experience, Amit, in the interview process, and what candidates should take into consideration for this? So for the NABARD, I have given 2 interviews. Last time also I gave, but it was from the specialist. I was appearing from the specialist stream. Last time I secured 24. And this year I got 42 marks out of 50. Good. So for the interview, we should focus more on our biodata. जो भी आपका biodata, we should analyze that, and from the each word we should try to make a question, and from that question we should उसके अंदर से एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अगर इंटरव्यूअर अगर उसमें से अपने को रिप्लाई कर रहा है या काउंटर क्वेश्चंस कर रहा है, तो वो क्वेश्चन अपने को ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही बनाना चाहिए. So सबसे पहले I think I focused on the biodata, then on the we should gather information from the NABARD side, what NABARD is doing, what are its infrastructure projects, what are various other products like refinance, supervision, and उसके अलावा the third point I would like to say is that we should focus on our education background, because there are 2-3 questions which they constantly ask to each and every person कि आपकी जो education है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं नाबार्ड में. So I think these your biodata and your education background and how it is relevant to the NABARD, and what are NABARD functions, how it operates. So I think these are much more important, and we should, apart from this, we should also focus how we are communicating. If you are not answering some of the questions, then it's absolutely fine. पर जो बोल रहे हैं, it should be comprehensible to the other people, and it should be clear and crystal. So I think that is much more important.
Okay, Amit, my last question to you. क्योंकि आपका experience रहा last year also you prepared, this also you prepared. So what 3 mistakes or 3 advices you will like to give to the new candidates they should not commit for this examination with your experience? The first advice I would like to give is that be consistent. There should be a discipline in your during your preparation. आपको consistent रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने 3 वीक पढ़ा and 2-3 दिन के लिए आप पढ़ाई छोड़ रहे हो. That should not be the case. You have to be very consistent. चाहे आप if 1-2 आवर के लिए ही पढ़ रहे हो, but you have to study till the interview part. और दूसरा I would like to say is that don't neglect the qualifying section. उसका बिल्कुल भी गलती नहीं करना है. एंड क्वालिफाइंग सेक्शन को ही आप एक ऐसा होना चाहिए कि आपका जो नोटिफिकेशन आने से पहले कि आपका क्वालिफाइंग सेक्शन पे आपका अच्छा सा पकड़ हो जाए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका मेरिट सेक्शन ही आपको आगे लेके जाएगा. और लास्ट में भी यही होता है कि अपन क्या करते हैं कि ज्यादा फोकस मेरिट सेक्शन की तरफ होता है, क्वालिफाइंग सेक्शन की तरफ कम हो जाता है जैसे जैसे एग्जाम आती जाती है. तो क्वालिफाइंग सेक्शन को पहले कंप्लीट कर लिया जाए एंड फिर बाद में मेरिट सेक्शन को पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है. तो एक ये बोलना चाहूंगा. एंड दूसरी एंड थर्ड चीज आई वुड लाइक टू से इज दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड बिफोर प्री एग्जाम. लाइक इट इज सेड दैट द मोर यू sweat in practice the less you bleed in battle. तो जितना ज्यादा आप प्री एग्जाम से पहले पढ़ोगे, जितना ज्यादा वर्क हार्ड करोगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए मेंस एग्जाम. तो दिस थिंग आई वुड एडवाइस टू द न्यू एस्पिरेंट. Okay, lot of thanks Amit for carving out the time from your busy schedule and just giving your suggestions to the new candidates how they should prepare, and all the best from my side for your future endeavors. I think that you will go to the much greater heights and all your dreams come true, Amit. Thanks a lot for supporting me. Thanks a lot for your support through the process, and thank you, and my best wishes to the new aspirant, those who are appearing for the NABARD Grade A 2022. All the best. Thank you, thanks a lot, Amit.